Hi guys, welcome to BYJU'S Exam Prep. I'm Nivedita Raje and today we are going to discuss how do you start your preparation from the scratch. Right, so CLAT 23 is finally over, everything is done with. The final answer key has also been released yesterday. राइट, तो अब सब कुछ हो चुका है, एग्ज़ाम भी हो चुका है, सब खत्म हो चुका है. अब हमें ज़रूरत है कि अगले साल का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी को कैसे शुरू करें. राइट, सो हाउ डू वी स्टार्ट फॉर दिस important exam which is so important, and where do we start from, what do we have to do, प्रिपरेशन को बिगिन कैसे करें, शुरुआती स्टेप्स क्या होते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या सोर्सेज हैं. we'll understand all of it right in today's session. So let us start. Now this is what we are going to do. This is the session agenda. We are going to have an overview of the exam 24. एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे. we'll also understand the syllabus of CLAT 24 and then we'll move on to the strategic points, that how do we start preparing for it, right? Sorry, wrong button. Now this is the exam overview. Before we proceed, you should know that we are launching comprehensive courses for CLAT 24, right? What do we offer in these courses will be revealed later on, and this is what we offer: 300 plus recorded videos across 5 sections. So there are live classes for your syllabus. Then we have रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस लाइव सेशंस. तो रिकॉर्डेड के साथ लाइव सेशंस भी होते हैं. जो लाइव सेशंस हैं वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं, उससे पहले भी रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं. सो यू कैन गो फॉर ईदर ऑफ द थिंग्स, राइट, जो भी आपको जिस भी तरह से आप कंफर्टेबल हैं. देयर आर मॉक टेस्ट्स विच आर बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न एज क्लैट, राइट. देन देयर आर मंथली ई मैगजीन्स फॉर करंट अफेयर, एंड वी हैव a content or a kind of content or a quality of content which has been curated by people who themselves have qualified CLAT. और ये बहुत ही deep एनालिसिस के साथ बनाया गया है, लगातार 5-6 साल को स्टडी करके, राइट. तो कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसी बेसिस पे कंटेंट क्रिएट किया गया है इन ऑल सेक्शंस, नॉट जस्ट लीगल, राइट. So there are limited seats available, and if you wish to enroll, you need to call us on this number, and you need to call us now. So don't wait for it. If you really want to take a step ahead, you really are serious about your preparation of CLAT, you need to be proactive. तो जो भी करना है, जैसे भी करना है, टाइम पे करना है. You need to start on time so that you're not really lagging behind. क्योंकि CLAT में बहुत सारी, it's not just the syllabus that you have to cover. CLAT needs you to have many other skills, and those skills can be acquired over time. वो ओवरनाइट नहीं हो जाती, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उनके लिए टाइम लगता है. और अगर आप इस टाइम पे शुरू कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन, तो वो स्किल्स भी आप टाइमली एक्वायर कर लेंगे, राइट. So this is the overview. Candidates can take exam for securing admission in undergraduate UGs and PG courses, and this test is applicable only for Indian nationals and NRIs, right. Foreign nationals direct university को contact कर सकते हैं ये जानने के लिए कि भाई उन्हें admission कैसे मिलेगा. Some of the exam highlights are these. The name of the exam is CLAT. Everybody knows it is conducted once a year. It is paper based, 120 minutes, which means 2 hours. 2 घंटे का एग्जाम है ये. इंग्लिश में एग्जाम है. It is only English. So students who are not really comfortable with this language, you need to have an understanding, at least basic. You need to at least understand what you're reading, right. Communication skill does not play any role when it comes to CLAT preparation, but you need to be able to understand English when you're reading it. Negative marking, it's a negative marking paper. You lose 0.25 mark each time you attempt a question wrong. So it is always advisable to leave a question if you're not confident about it. Do not be adventurous. This is something that you will learn over time when you start taking CLAT mocks. जब आप sectional tests देने लगेंगे, mocks देने लगेंगे, तब आपको किस तरह से इस चीज़ से टैकल करना है ये समझ आएगा. शुरू में देखते ही ये चीज़ थोड़ा सा स्कैरी लगता है, लेकिन is cutoff predictability possible at this conjunction? We have predicted something.
in the analysis, you can go watch it. Okay, yeah. And before we proceed, you should know about our topper Anika Sehgal, who has secured All India rank 18 in ALIT. We are waiting for CLAT. Let's see what results we are able to produce. Now this is the exam pattern. Wait. Legal reasoning. These are the sections: current affairs, English language, logical reasoning, and quant. So these are the 5 sections that you have. This and this play major role. 50% of the paper is comprised of these sections. English language और logical का भी काफ़ी रोल है. Quant थोड़ा कम आता है, लेकिन इस बार काफ़ी complicated आ गया था. Right, total of 150 questions, multiple choice, objective questions हैं. 1 mark है. If the candidate does not attempt a question, you don't secure a mark. But if you attempt it wrong, you lose 0.25. Like I said, it's better to leave than to attempt. Oh, sorry. Yes. हाँ? क्या हो रहा है ये? Now this is the exam pattern. Quantitative has about 10% of the weightage. 13 to 17 questions are asked every year. Legal is maximum. This time there were 40 questions, and they have been consistent with this number for 3 years now. 4 actually. In 2021, 22, and now in 23, 40 questions every year. Not 40%. 40 questions every year. Maximum number of questions. Right, 8 passages. Logical reasoning about 28 to 32. English about same. And general knowledge, there were lesser questions this year, but GK was pretty complicated as students were complaining. Right, so this is the exam pattern. तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में मेहनत करनी है. This definitely carries a lot of marks, but then all sections are equally important. If you choose to leave this section because you are scared of maths, you are making a huge mistake. अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो क्लैट का क्वांट इतना डिफिकल्ट नहीं है. 23 के पेपर को देखकर आप डर जाएंगे, शायद आपको लगेगा अरे ये ऐसा क्वांट है तो मैं तो कभी ना कर पाऊँ. राइट, लेकिन वो फिर आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, वो सबके लिए डिफिकल्ट है. और बेसिक अरिथमेटिक ही आता है, कोई अलजेब्रा ज्योमेट्री नहीं पूछी जाती है. और अगर आप इफ यू आर रेगुलरली प्रैक्टिसिंग इट तो क्वांट भी आ जाता है. राइट, देयर इज नो मेंसुरेशन, देयर इज नो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, देयर नो बाइनॉमियल थ्योरम्स एंड ऑल ऑफ दैट कॉम्प्लिकेटेड स्टफ. एक बेसिक अरिथमेटिक जो आपने 9th और 10th में पढ़ा था वही आपका सिलेबस है. उसका जो पैटर्न है, मतलब जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सवाल को स्कैरी और कॉम्प्लिकेटेड बना भले ही देता है, लेकिन सवाल अपने आप में उतना डिफिकल्ट नहीं होता. तो अगर आप शुरुआत करते हैं, वीडियोस को देखना शुरू करते हैं, अपनी गाइड्स से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो आपको 1 मंथ के अंदर ही क्वांट इंटरेस्टिंग लगने लगेगा. मैं इस चीज़ पे एम्फोसाइज इसलिए करती हूँ, इवन दो आई एम नॉट अ क्वांट फैकल्टी, आई टीच लीगल, आई स्टिल एम्फोसाइज ऑन दिस बिकॉज क्लैट हैज़ अ होलसम अप्रोच. ठीक है, क्लैट एक होलसम अप्रोच के साथ अगर दिया जाए तभी आप उसे क्वालिफाई कर पाएंगे. If you choose to leave some sections and focus only on the few, you will not be able to qualify. Legal एक determining section है, लेकिन legal में score करना भी difficult है. Probable conclusions निकलते हैं. अब देखिए, सोचने वाली बात है. If you look at CLAT 23 this year, there were some answers that were absolutely wrong according to us. If you read the passage, if you read the questions, if you read the logic, if you read the reasoning in the passage and everything, you would be able to understand कि भाई ये आंसर तो गलत है, पैसेज के हिसाब से ये आंसर नहीं है. लेकिन क्लैट ने उस आंसर को गलत नहीं माना. Right, they haven't given us the justification of why they deem that option important or correct, but then that is the correct option. अब उसका logic या reasoning हमें clear नहीं है, लेकिन क्लैट ने उसे declare कर दिया कि ये सही है. What can you do, right? तो इसीलिए legal देखने में interesting है. Of course it is important, interesting भी important भी है. लेकिन लीगल में आप श्योर शॉर्ट 100% एक्यूरेसी के साथ सेक्शन को में स्कोर कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है. राइट, क्वांट इनफैक्ट आप मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं. जीके अगेन एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया जा सकता है. जीके में इट्स अ यस एंड नो गेम.
either you know an answer or you don't know an answer. तो इसे सॉल्व करना सबसे पहले ज़रूरी है ताकि आप मैक्सिमम टाइम सेव कर सकें, राइट? सो यू नीड टू सॉल्व दिस सेक्शन फर्स्ट इवन इफ यू आर ट्राइंग टू टेक अ मॉक. इन दोनों सेक्शंस को नहीं छोड़ना है. अगर आप इन दोनों इस सेक्शन को और इस सेक्शन को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं और इसको भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो ये दोनों सेक्शंस आपके क्वालिफिकेशन को रोक नहीं पाएंगे, राइट? और इन तीनों में मेहनत करना रिलेटिवली इजी है इन दोनों के मुकाबले, क्योंकि ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल सेक्शंस हैं, राइट? बट देन अगेन यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव अ सेक्शन, सो यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल ऑफ देम. सब पे इक्वल एफर्ट लगाना है अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग. जिन सेक्शंस में आप के हिसाब से आप बहुत अच्छे हैं उसमें you don't have to give as much time. But if there is a section that you feel or not, if you don't feel confident about, that is the section where you need to work the maximum, right? उसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट आपका लगना चाहिए. आइडियली किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने की यही स्ट्रैटेजी होती है. वीक पॉइंट्स पे ज़्यादा काम और स्ट्रेंथ्स पे कंसिस्टेंट धीरे धीरे काम करते रहना है. Sorry guys, yes. Okay, moving on. This is the syllabus. English language, you have comprehensive passage, writing incorrect, grammatical sentence, fill in the blanks. General sections में there is current affairs and general knowledge. कितना भी पढ़ लो कम है. But we try to stick to what is important. कोशिश की जाती है कि आपको वही पढ़ाया जाए जो important है, लेकिन फिर भी इस सेक्शन को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है. और ये सिर्फ क्लैट में नहीं है. इट्स नॉट जस्ट विथ क्लैट दैट दिस सेक्शन इज अनप्रेडिक्टेबल. इट इज अनप्रेडिक्टेबल इन ऑल कंपेटिटिव एग्जाम्स, नो मैटर व्हाट कंपेटिटिव एग्जाम इट इज. बैंक का हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, जो भी हो कोई एग्जाम जिसमें जीके पूछी जाती है, आप 100% कवर नहीं कर सकते. तो सबसे अच्छा तरीका है यू स्टिक टू limited references, limited sources and you keep on revising those sources. तो उनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपसे पूछी जाए वो आपको 100% आनी चाहिए. अगर कुछ रह गया एग्जाम में, फार फेचड आ गया है, तो वो आपको क्या, किसी को भी नहीं आएगा, राइट? सो दैट्स हाउ यू tackle general affairs or general knowledge rather. Then we have logical reasoning. Logical reasoning interesting है. With consistent practice you start getting the hang of it. राइट और क्लैट में वो इतना डिफिकल्ट आता भी नहीं है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. comprises of passages 300 word on concepts such as relationships, analogies, logical sequences, arguments. Some of the topics are analogy, series, relationships, alphabet, coding, decoding, number, direction and distance, ranking, time sequence, odd man out. Now these seem a little difficult. They sort of confuse a child, but guys, when you start preparing, when you start watching videos, you'll understand यार ये तो बहुत easy है. Hindi medium students can definitely prepare for CLAT. CLAT does not have a requirement of a fluent English speaking skill. As long as you can read and understand English, you are good to go, right? तो मीडियम आप कहाँ से आए हैं ये क्लैट में इम्पॉर्टेंट नहीं है. स्ट्रीम कौन सी है आपके पास ये भी क्लैट में इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो क्लैट बस आपकी उस मोमेंट पे आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसको टेस्ट करता है, राइट? With any medium or from any medium you come from, if you're able to get the hang of these sections, practice enough, you can score, you can become a ranker. Okay? CLAT is for everyone. So these, when you start taking the sessions, when you start taking the classes, you'll understand them. Slowly you'll understand them and you'll be able to solve them with a lot of accuracy. आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मज़ा भी आने लगेगा जब एक के बाद एक आप सवाल हल करने लगेंगे. But for that you need to watch the classes. You need to understand how these questions or how these topics are understood and solved. Okay? Then we have quantitative aptitude. This is set of facts, pictorials, graphs, propositions, textual, diagrammatic representation of numerical data. Basically ऐसा होता है, देखो ये बेसिक अरिथमेटिक ही है, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है. परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब थोड़ा सा ज़्यादा पूछ लिया जाता है. बेसिकली ऐसा होता है कि एक पैसेज आपको दे दिया जाता है, उस पैसेज में
डेटा इंटरप्रिटेशन उसे कहते हैं, डेटा होता है, उस पैसेज के हिसाब से आपको टेबल बनानी होती है और फिर उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको समझ आता है कि भाई ये आपसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेशन मांग रहा है या बस बेसिक लॉजिक से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अगेन दिस इज समथिंग you'd be able to understand when you start watching the classes, when you really start preparing. That is when it happens. Seems scary? Is not. Trust me, not at all. Legal aptitude. Now this is the most interesting. Probably when you start preparing, you will find this section to be the most interesting और आप सबसे ज़्यादा confident इसी में feel करेंगे. भाई लॉ सॉलिड है अपना, राइट? और ऐसा होता भी है. लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे पढ़ने में मज़ा आता है, वो समझ भी आ जाता है, और जब आप पैसेज का प्रॉपर कंक्लूजन निकालते हैं, ऑप्शन सही होने लगते हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि भाई पेपर का जो मेजर सेक्शन है उसमें इतना अच्छा हूँ मैं, बाकी सब तो झंडे गाड़ ही दूंगा. लेकिन ये थोड़ा सा अगेन अनप्रेडिक्टेबल्स आता है, राइट? तो व्हाट यू कैन डू इज द सरफेस दैट वी अलाउ यू टू स्क्रैच, like the knowledge that we give you is not that of a lawyer. Obviously we are not creating lawyers here. We are only giving you a handful information that is enough to qualify CLAT, right? इतना ही आपको लॉ पढ़ाया जाता है कि आपको CLAT में दिक्कत ना हो. अब सोचने वाली बात है कि CLAT, if you read the consortium announcement and everything, and if you read the passage, it's a passage based exam, right? There are passage and you solve the questions, kind of like the unseen passages that you used to get in your schools, something that you have been doing for a decade now. 10 साल से कर रहे हैं आप unseen passages, right? तो लॉ की क्या ज़रूरत है? Why do you have to study law? Why do you need to understand the concept of murder and culpable homicide and all of that? Well, the reason is that despite the fact that CLAT is a passage exam, we cannot forget that it is a time-bound exam. Okay, you're supposed to solve all questions, read so many passages in a limited amount of 2 hours. That's all that you have. 2 ही घंटे होते हैं बस, राइट? और इन 2 घंटों में आपको लॉ जैसा एक इमेंसली प्रॉब्लमैटिक और डिफरेंट फसेट, मल्टी फसेट का कंसेप्ट भरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, वो भी एग्जाम के प्रेशर में. और वो प्रेशर इतना होता है कि आप आता हुआ भी भूल जाते हैं, राइट? तो अगर आप बिना तैयारी के चले गए, बिना लॉ को समझे चले गए, बिना लॉ को समझे बिना चले गए, तो आपके लिए वो पैसेज बहुत बड़ी स्ट्रगल हो जाएगी. बिकॉज यू आर रीडिंग समथिंग दैट यू हैव नेवर रेड बिफोर. यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर्टिकल 19 इज. यू डोंट अंडरस्टैंड द फ्रीडम of speech and expression. You don't know when can you claim your fundamental rights or who can you claim it from. आप बिल्कुल नहीं समझते कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ द लैंड क्या है. आप नहीं समझते कि इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों बार कर दिया, राइट? और उन्होंने अपनी कुर्सी को कैसे बचाया. जब आप ये सब चीज़ें समझते ही नहीं हैं, तो उस पैसेज को उस टाइम पे कम टाइम में सॉल्व करना इज अ हरक्यूलियन टास्क. You have to be extremely great at reading if you want to solve legal aptitude without any prior knowledge whatsoever. आप नहीं कर पाएंगे. Now think about it. If I tell you a story that you might already have heard before, ठीक है, कोई भी story ले लेते हैं. You must have heard that story जहाँ पे there was a arrogant lion and the rabbit took him to a cave, a well, and the lion started shouting and there was an echo and the lion thought that the image from the well is a real thing and that image is cursing him back and he jumped in the well, right? So stories like this, if you read those stories or if you get those stories in a passage, it's no longer an unseen passage. An unseen passage is difficult to tackle, but if a passage is already seen, understood and well read or well understood, it's easy to read it quickly and it's easy to solve it quickly. ठीक है, अगर मैं आपको पहले ही लॉ समझा देती हूँ और आप उस लॉ को समझ के उस पैसेज को पढ़ते हैं, तो वो पैसेज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वही इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत अच्छे से आती है. तो वो लॉ का जो पैसेज है, आप उसे कम टाइम में पढ़ के जल्दी से समझ के तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे.
और बिना पढ़े चले गए तो उस पैसेज को पढ़ने में आपको 15-20 मिनट लग जाएंगे और उसके बाद भी आपको लगेगा कुछ समझ में आया नहीं है। और इसी चीज से बचाने के लिए आपको लॉ पढ़ाया जाता है, right? So my advice to all the students who have decided to prepare on their own, do not forget to study law. Okay? Do not take commentaries. रतन लाल, धीरज लाल या डीडी बसु मत खरीद लेना, वो नहीं है important. लेकिन एक superficial knowledge, you have to scratch the surface, right? Not barely, properly. Okay. Now you cannot wait for tomorrow. If you are really serious about this exam, you need to start now. ठीक है, अगर आप इंतजार कर रहे हैं साल के खत्म होने का कि नए साल पे रेजोल्यूशन लेंगे, on 31st of December I am going to take a resolution and then I am going to start preparing. Don't do that. The more you wait, the more time you're wasting. If you start on, if you start everything on time, you are left with a lot of time. And whenever it comes to a competitive exam, I'll tell you on my personal experience, revision is the key. Revision is how you qualify, and revision is what gives you rank. It's not just the qualification that you should aim for. You should aim higher. आप CLAT में इसलिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको बस CLAT निकालना है, आपको कोई भी NLU चलेगा नहीं. एम हायर, रैंक को लेकर चलिए यार, मैं बढ़िया NLU निकालूंगा, टॉप 5 में जाऊंगा, टॉप 3 में जाऊंगा. और ऐसा होगा कब? जब आप टाइम से प्रिपरेशन शुरू कर देंगे. इफ यू स्टार्ट ऑन टाइम, यू विल फिनिश ऑन टाइम. And if you finish on time, you are left with a lot of time to revise. And if you keep revising till the day of the exam, the confidence that you get from that revision is unimaginable. That pressure that surrounds you, that makes you panic stricken, that gives you so much anxiety right before the exam is only because you have not revised properly. अगर आप अच्छे से 5-6 बार रिवाइज कर चुके हैं तो वो जो एंग्जाइटी होती है एग्जाम से पहले सराउंड करती है, दिमाग खराब करती है, दुनिया भर के एप्रीहेंशंस देती है, ओ नहीं हुआ तो क्या होगा ये और वो आता ही नहीं, वो नहीं आती एंग्जाइटी. थोड़ी बहुत आती है, ऑब्वियसली डरते हैं बच्चे, बड़े बड़े दिग्गज डर जाते हैं जो कई बार एग्जाम्स दे चुके हैं. तो आप लोग, यू आर जस्ट अ चाइल्ड, यू विल डेफिनेटली बी स्कैर्ड, बट दैट फियर विल नॉट बी अ बर्डन. It will not surround you, it will not affect you as much, right? इसीलिए आपको सही टाइम पे प्रिपेयर करना है ताकि आप सही टाइम पे फिनिश कर सकें. It's all about finishing on time so that you can start revising. और जितनी बारी रिविजन होगा, प्रिपरेशन उतनी ही बढ़िया होती चली जाएगी. समझे? हीरे को जितना घिसो वो उतना ही चमकता है, और प्रिपरेशन का भी यही कंसेप्ट है. ओके? Now, how to strategize your preparation? There might be direct questions from English language, paper comprising like vocab and synonyms. So, candidates are required to prepare accordingly. For general knowledge, logical reasoning, legal English, you can follow class 12th curriculum. For quantitative aptitude, you can follow class 10th curriculum. Okay. This is how you can strategize your preparation. So you have to start early, 12-15 months before your exam. So this is the time to start right now, because CLAT 24 भी दिसंबर में ही होगा, है ना? Consistency again is something that you have to maintain. एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए और 50 दिन का गैप ले लिया तो फिर हो गई, वो जो 10 घंटे पढ़े थे वो बिल्कुल मिट्टी में मिल गए. तो भले ही 2 घंटे पढ़ो रोज, लेकिन पढ़ लो. इसको भी कम कर सकते हो. If you start on time, 1 hour is enough every day. 1 hour is enough. Just attend one session, one class, or whatever that we have scheduled for you in the comprehensive course. Just take that class. जो आपको उस दिन पढ़ाया गया बस उतना पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, सोने से पहले रिवाइज कर लो. पता भी नहीं चलेगा CLAT कब अच्छा हो गया, पता भी नहीं चलेगा प्रिपरेशन कब खत्म, सिलेबस खत्म. लो, मैं तो मस्त हो गया, मेरी तो प्रिपरेशन भी खत्म, लॉजिकल भी खत्म, इंग्लिश भी खत्म, लॉ भी समझने लगा हूँ, जीके तो आती ही है, और क्वांट तो कर ही लूंगा. राइट? तो ये सब तभी होगा जब कंसिस्टेंट एफर्ट्स आएंगे, लगातार कंसिस्टेंटली आप धीरे 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 प्रिपेयर करते जाएंगे. अब यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है वो बहुत रोल प्ले करता है. नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, यू विल बी एट अ डिसएडवांटेज बिकॉज यू वोंट बी एबल टू स्ट्रेटेजाइज yourself or discipline yourself in a routine or through a routine.
but a comprehensive course or a coaching institution gives you that routine. क्लासेस का शेड्यूल होता है, और अगर आप सिर्फ उसी शेड्यूल के हिसाब से चलते रहें तो भी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है, और ये कंसिस्टेंसी काफ़ी है क्लैट को निकालने के लिए, राइट? तो इस तरह के जो नेशनल लेवल कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इनके लिए ज़रूरी है कि आप गाइडेंस में प्रिपेयर करें ताकि आप डिसिप्लिन में रह सकें. एंड इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन, इफ़ यू हैव नॉट set your preparation in a proper routine, you will be haphazard, you will be disoriented. और आपको कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, ये आप कुछ नहीं समझ पाएंगे. और इसी को समझने में इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, you won't even realize that it will be October and just after another month you have your exam. और फिर YouTube पे वही सवाल आते हैं, मैम 3 दिन बाद एग्जाम है, अभी इससे प्रिपेयर करूँ तो क्वालिफाई कर लूँगा? और इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं. There is no answer to this question, right? Build stamina for offline work, serious stuff, right? You need to develop your reading skill. This is the most important thing. This is the most important thing. Reading is what gives you rank. And like I said, if you start preparing on time, आप read कर सकते हैं. Newspapers से शुरुआत करिए. Take any newspaper that you like. Don't read the entire thing. Just read what you find interesting, right? And keep on doing it. Repeat that exercise every day. Read some part of the newspaper that attracts you, that you find interesting, and keep on doing it. Initially, you will find it very difficult to understand that segment in one go. You'll find it difficult, you'll find it extremely complicated. There would be so many foreign words that you have no idea about. But slowly, right, slowly, after a certain amount of time, you'll start getting the hang of it. The time that you were taking will reduce automatically. You won't even realize. And you won't even realize your speed will start improving. So if you want to know, ma'am, how to improve reading skill, the answer to this question is by reading. There is no shortcut. There is no shortcut. If you want to work on your reading skill, you have to read. अगर गाने में अच्छा होना चाहते हो तो गाना पड़ेगा. अगर डांस में बढ़िया होना चाहते हो तो डांस करना पड़ेगा. सिर्फ सोच के तुम बढ़िया नहीं हो पाओगे, ठीक है? Just because you're thinking, you won't automatically become what? A proficient player in that art form. No. You have to practice it. And reading is also an art, right? Have you seen some people who can finish a book in a day? I can do it. And I can do it because I have been reading for a long time. I started reading when, I don't know, I mean, it's so long I don't even remember. Right? So, अब मैंने किताबें पढ़ी हैं, इतनी पढ़ी है कि मेरी स्पीड बहुत अच्छी हो गई. मैं एक किताब को एक दिन में ख़त्म कर सकती हूँ. तो ये मैंने डेवलप किया है. This is something that I have acquired over the years. This is something that you might not be able to do so quickly. लेकिन आप अच्छे तो हो ही सकते हैं. Right? You can become good at it. Cost of online course, Khushi, you would have to, there was this number right at the beginning. You call that number, they'll tell you everything. Everything. The cost, the schedule, the number of classes, the faculty who would be teaching you, everything. Okay? तो न्यूज़पेपर से उठाइए, शुरुआत करिए. कोई नॉवल उठा लीजिए, कुछ भी इंटरेस्टिंग, मतलब कोई भी नॉवल चलेगा. Even if you pick Chetan Bhagat, I won't judge you. Like, I don't judge anybody generally. But you can pick anything that you like. ठीक है, कुछ भी उठा लो, कुछ भी जो भी तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे. पल्प फिक्शन उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई. रीडिंग तो पल्प फिक्शन से भी होगी, बस इंग्लिश उठाना. हिंदी की रीडिंग प्रैक्टिस नहीं करनी, इंग्लिश की करनी है, एग्जाम इंग्लिश में, राइट? So read anything, even if you want to read a graphic novel, I am good with that too, right? Just read whatever you want, whatever you can lay your hands to. But don't forget to read the newspaper also. Don't just read stories, because that's not the only thing that is going to be there. So you need to read the newspaper. Like I said, start small. Start with 2, 3, 4 segments and, develop over time. Then it improves your vocabulary and grammar also, because, they're generally edited by a number of people, proofread so many times. So the kind of language that they have, the sentence formation is absolutely correct. And that's
where you learn your English concepts also. भाई grammar का rule है, ये sentence इस तरह से लिखा जा रहा है, oh that's the rule, right? This is what this word mean. Oh my god, I didn't know, right? And you start remembering those words because they're normally used. Like in journalism, there are some words that are usually used which are not used in ordinary communication. So वो newspaper में ही दिखते हैं, वो उन्हें पढ़ो समझो भाई पूछ लिए जाते हैं, right? Reading skill, of course you need to work on it and you need to enhance your legal knowledge. इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा, तो ये आपको करना ही पड़ेगा. Okay. Step 1 is to learn. Focus on getting the fundamentals or concepts on place. What does those concepts that of logical reasoning entail, right? Analogy and odd man out and what is all that? क्या है वो सब? Quant में data interpretation क्या है? कौन से words important है English में? What part of GK is important? Should I study Lucent? Right? What is murder? Is criminal law even important? What can I leave? What can I read? All that is basic. All that is fundamental. And you have to figure this out. That is the step 1. Step 2 is to practice multiple choice questions of the right level difficulty. You cannot solve too easy questions. Too difficult would do, but too easy questions not the right way. You get habitual of solving easy questions, and if you're given a difficult passage or a complicated passage, you would be stuck. Not a good idea. Step 3. So whenever you're solving questions, whether it is a question from a book or from an online source, make sure that the level of difficulty is absolutely right. Okay. Then you need to test yourself. Mock tests are the closest to CLAT. Again, you need to determine the level of difficulty. Read the sample papers that consortium released. Read the past year question papers. Match the level of passages and then decide whether or not you can solve passages from that particular source. Then you need to analyze all mocks in detail so that you can work out on your test taking strategy. शुरुआत में mock में आपके कुछ भी marks नहीं आएंगे. 20, 25, 30 and you would be depressed. Don't be depressed. You're just starting it. नंबर कम ही आएंगे. हाफ बेक्ड प्रिपरेशन में हाफ बेक्ड स्कोर ही आएगा. प्रिपरेशन अच्छी होती रहेगी, स्कोर भी इंप्रूव होता रहेगा. धीरे धीरे समझो कहाँ गलती कर रहा हूँ, कैसे सुधार सकता हूँ, एटसेट्रा, राइट. और ये तभी पता चलेगा जब मॉक्स को रेगुलरली सॉल्व करोगे. Then you analyze all mock CLATs in detail so that you can, we have already done it. Revise all important questions every week, right? Now, like I said, comprehensive course, secure a seat. This is all that we have. You need to attend your classes regularly to learn the concepts. That is a non-negotiable thing. You need to, there are not too many classes. They're not a class every day. We understand that some of you are still school going. Not everybody is a dropout. So we have devised and we have curated this course or keeping your school and coachings in mind. So there are just 2-3 classes a week. 60 plus hours of legal reasoning, work, then we have 90 plus hours of quant, 40 plus data interpretation and GK. Okay, so there are about 330 hours of live classes, 1.5 hour class. It's usually a 90-minute class, can go further, but it will not be too difficult for you. आप class पे बैठे रह सकते हैं बहुत अच्छे से, right? Classes are sequenced in a manner that takes you from the beginners level to a very mature level. बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं लेकिन आपको वहां तक पहुंचा देते हैं जहां तक आपको होना चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए. What is happening? Yes. Multiple choice questions, right level of difficulty. This is what we are offering. There are more than 2,000 questions of legal, 2,000 questions, more than 2,000 questions of this quant, DI and GK. Right. So there are about 10,000 questions, more than 10,000 questions. If you solve even 2,000 total, right, you are scoring amazing in CLAT. रैंक निकालोगे तुम अगर 2000 भी सॉल्व कर लेते हो तो. लेकिन ये होगा तभी जब टाइम पे प्रिपरेशन शुरू होगी. Practice as many mocks as you can. The CLAT difficulty level helps you practice as per the paper pattern. So these are the number of mocks that we are offering for CLAT and these are the non-CLAT mocks, right? So this is the preparation strategy, guys.
I hope you understood something, you learned something from it. I'll emphasize on this again, you cannot waste any more time. Start, and you need to start right now, right? So that's all for today. Thank you so much. Subscribe to our channel if you haven't already. Press the bell icon so that you know when we are releasing our videos. You can follow us on Insta at BYJU'S Exam Prep Law. You can like us on Facebook, join our Telegram channel, also download our app, right? So guys, I'll see you again tomorrow. तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखेंगे. क्लैट को किस तरह से टैकल करना है ये हम धीरे धीरे समझेंगे, सब पढ़ेंगे, सब हो जाएगा, right? Good night everyone. Bye bye. Thank you so much.